So today we'll learn how to prepare final accounts of sole trading concern. The main object of preparing account is to know profit or loss and financial position of the concern. Every trader prepares their books of accounts to know their final result of their business. The main object of any business is to earn profit. Every business is profit motivated. So every businessman would like to know the result of their business. They would like to know whether they are getting profit or incurring loss from the concern. For that purpose, we are preparing account books. So the main object of preparing account books is to know the result of the business, is to know profit or loss of the business and financial position of the business. So every concern, every business, every company ascertain whether they earn profit or they incur loss, once in a year, at the end of the year. As soon as transactions takes place, first we record all our business transactions entries into journal. Later we post all those entries from journal to ledger, and after preparing ledger, we will prepare one statement. That statement is known as trial balance. Trial balance is a list of ledger account balances. And on the basis of this statement, on the basis of trial balance, we will prepare final accounts. So final accounts are prepared at the end of the accounting year. The accounting year might be calendar year or financial year, because some traders adopt calendar year as their accounting year and some concerns adopt financial year as their accounting year. Calendar year starts on 1st of January and ends on 31st of December, and financial year starts on 1st of April and ends on 31st of March. The traders who adopted calendar year as their accounting year will prepare their final accounts on 31st of December at the end of the calendar year, and traders who adopted financial year as their accounting year will prepare their final accounts on 31st of March. Final accounts are prepared once in a year at the end of the accounting year. Now, final accounts consist of three: trading account, profit and loss account, and balance sheet. Trading account. The main object of preparing trading account is to know gross profit. Profit and loss account shows net profit, and balance sheet shows financial position of the concern. Trading account, because it is an account pro forma is in T shape. All accounts pro formas are in the shape of capital letter, English letter T, capital T. In that pro forma, we will find two sides, left hand side and right hand side. Left hand side called debit side and right hand side called credit side. Profit and loss account is also in T shape. In this account pro forma also we will have two sides, debit side and credit side. So the main object of preparing trading account and profit and loss account is to know profit. One question will arise here: how to ascertain profit? What is profit? Profit is nothing but difference between income and expenses. If you want to ascertain profit of any concern, then you have to take out difference between income and expenses. For that purpose, first you have to take total of income, then you have to take total of expenses, then you have to deduct your total expenses from your total income. That difference amount is our profit. So profit formula is income minus expenses. So the object of preparing trading and profit and loss account is to know profit. So how can we ascertain profit? By deducting our expenses from our income. So for that purpose, first you have to make a list of your income, and then you have to make list of your expenses, then you have to take both totals, then you have to take out their difference. That is only our profit. So therefore, in trading account and in profit and loss account forma, we provided two sides, left hand side and right hand side. On one side, we record all our expenses,
and on another side we'll record our incomes. On one side we'll make list of our expenses, on another side we'll make list of our expenses of all expenses, because we'll prepare final accounts on the basis of trial balance. Trial balance is a list of ledger account balances. Whenever he will ask you to prepare final accounts, in the problem trial balance will be given, because final accounts are prepared on the basis of trial balance. Trial balance is nothing but a list of ledger account balances. The list will be provided. List of our incomes, expenses, assets and liabilities. All ledger account balances list will be given in the problem. Trial balance will be given in the problem. On the basis of that trial balance, on the basis of that list, we have to prepare final accounts. So for preparing final accounts, you must be in a position to know or to differentiate which expenses will appear in trading account, which expenses will appear in profit and loss account, and which expenses will appear in balance sheet. Which items should be recorded in trading account and which items should be recorded into profit and loss account, and which items should be recorded into balance sheet. Okay, if you are aware, if you know, okay, which items will appear into which account, then you can easily prepare final accounts. So before preparing final accounts, okay, so we must learn, we must know which items should be recorded into which account. Okay, for that purpose we classified expenses into different types. Okay, before learning how to prepare final accounts, first we must have to learn about expenses and different types of expenses. Then only we will be in a position to know which items will appear into which account. So our next topic is, in our next topic, before learning how to prepare final accounts, we will discuss in detail about expenses and different types of expenses. Before learning how to prepare final accounts, first we'll discuss in detail about expenditure. Expenditures are classified into different types. Expenditures are classified into different types on the basis of their nature. Expenses, some expenses are recurring in nature and some expenses are non-recurring in nature. So expenses which are recurring in nature, what does it mean? Recurring in nature means which incurred again and again. These are those expenses which incurred again and again. Expenses which incurred frequently, on daily basis, or on weekly basis, or on monthly basis. So those expenses we call recurring expenses. So expenses which are recurring in nature or expenses which incurred frequently, called revenue expenses. So there are some expenses which are non-recurring in nature, means these are those expenses which incurred very rarely, once in years. Okay, so expenses which are non-recurring in nature. For example, suppose you purchase asset. Suppose you spend some amount for acquiring asset. Suppose you purchase one motor car or building or furniture or machinery. So these are those expenses which you incurred on acquiring asset. So these are those expenses which will not incur on daily basis, because once you purchase asset, once you purchase one machinery, you need not to purchase it again after 1 month or after 1 week or after 1 year, because this machinery working life or this machinery you can put into your usage for more than a year. For just suppose, for example, its working life is 10 years, you can put it into your usage for the period of 10 years. You need not to spend some amount for acquiring that machine. तो पैसा जो आप स्पेंड कर रहे हो मशीन परचेज करने पर, बिल्डिंग परचेज करने पर, कोई भी एसेट परचेज करने पर, एक बार स्पेंड करोगे तो वो एसेट आपको
1 साल से 1 ईयर से ज़्यादा यूज़ में आएगी, आप उसको यूज़ में ला सकते हैं, अगेन आपको वो खर्चा नहीं होगा। तो these are those expenses which incur which are non recurring in nature, कभी कभी होता है। मशीन हम डेली नहीं परचेस करते, मंथली परचेस नहीं करते। एक बार आप परचेस कर लिए तो वो मशीन आपको 10 ईयर्स, अगर लाइफ है उसकी वर्किंग लाइफ 10 ईयर्स है तो 10 ईयर्स तक काम में आने वाली है। 10 ईयर्स तक वो मशीन फिर से आपको परचेस करने की जरूरत नहीं। तो मशीन एसेट्स पर आप जो भी खर्च कर रहे हो, ये ऐसा एक्सपेंसेस बार बार नहीं होता, एक ही बार होता, सालों में एक बार होता। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो ईयर में, कई ईयर में एक ही बार होते हैं, बहुत कम होते हैं, एक ही बार होते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। और जो एक्सपेंसेस बार बार होते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज यू पेड रेंट ऑफ योर फैक्ट्री या यू पेड रेंट ऑफ योर ऑफिस। तो ये रेंट जो है, वी पे रेंट ऑन मंथली बेसिस, मंथली होती है एक्सपेंसेस। सैलरी पे कर रहे हो टू योर स्टाफ, salary we pay salary to our staff on monthly basis, every month we pay salary। electricity bill pay kar rahe ho, every month we pay electricity bill। so these are those expenses which incurred on monthly basis, some expenses incurred on daily basis। तो ये वो expenses है जो बार बार होते, frequently होते, हर मंथ हो रहा, हर दिन हो रहा। तो जो हर दिन होते, बार बार जो होते expenses, उस expenses को होते हैं revenue expenses, जो कि recurring in nature। So these are those expenses which we are incurring for running our business, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसे मीट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो कैपिटल एक्सपेंसेस एसेट्स को परचेस करने पर जो होते हैं वो कैपिटल है। एसेट्स को मेंटेन करने पर, एसेट्स परचेस करने के बाद आपको एसेट्स को मेंटेन भी करना होता, फ्रॉम टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाना पड़ता। तो सर्विसिंग करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, सर्विसिंग करवाने पर क्यों स्पेंड कर रहे हो अमाउंट, उसे मेंटेन करने के लिए। तो एसेट्स को मेंटेन करने पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, और एसेट्स को परचेस करने पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल होते हैं, क्योंकि वो एक ही बार होते हैं। और बिजनेस को परचेस करने पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस है। ओके, बिजनेस आफ्टर एक्वायरिंग, बिजनेस आफ्टर परचेसिंग कंपनी, वन कंपनी, you have to run that company, and for running that company again you will incur some expenses। उसको रन करने के लिए बिजनेस परचेस करने पर जो एक्सपेंस है वो एक ही बार होगा, एक ही बार बिजनेस परचेस करते हैं, वो कैपिटल है। बिजनेस परचेस करने के बाद बिजनेस को रन करने के लिए जो आप स्पेंड कर रहे हो वो बार बार होते हैं, वो रिकरिंग इन नेचर है, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। Expenses which are recurring in nature called revenue expenses, and expenses which are non recurring in nature called capital expenses। Again, revenue expenses further classified into two types, okay, direct expenses and indirect expenses। Direct expenses, which expenses called direct expenses? Just like if we take an example of a manufacturer is a person who is engaged in making some product। so making product, what does it mean? Man cannot make anything, neither he cannot destroy anything. All things provided by nature, by God. Man is simply engaged in converting its shape for creating utility in those things। So manufacturer is creating utility, okay, by either by converting its shape or by shifting it from one place to another place। तो मैन्युफैक्चरर, हम इंसान कोई चीज बना नहीं सकते, सब चीजें गॉड प्रोवाइड किया, इंसान सिर्फ उस चीज में यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, उसकी यूजफुलनेस बढ़ा रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है यूटिलिटी, चीजों में यूटिलिटी कैसे क्रिएट कर रहा है, या उसका शेप चेंज करके, या उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करके। जैसे कि पेपर, नोटबुक है, नोटबुक पेपर से बनता है, पेपर कॉटन से, पेपर जो है सो लकड़ी से बनता है, लकड़ी गॉड प्रोवाइड किया। तो आदमी क्या कर रहा है, पेपर बना रहा है। जैसे कि क्लॉथ है, कपड़ा है, शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, कपड़े के लिए कॉटन चाहिए, कॉटन वुड से नेचर प्रोवाइड कर। तो कॉटन, नेचर प्रोवाइडेड दिस रिसोर्सेज, मैन इज ओनली कन्वर्टिंग इट शेप। So manufacturer is making a product. For making any type of product, first we require material. Okay, so we require material। After acquiring material, जैसे if we take an example of a furniture manufacture कर रहा है, furniture चेयर्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसके लिए वुड चाहिए। तो फर्स्ट विल परचेज वुड,
जैसे कि नोटबुक बना रहा है तो उसके लिए पेपर चाहिए। शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर बनाने के लिए शुगर केन चाहिए। शुगर केन क्या है, उसके लिए मटेरियल, ठीक है। नोटबुक बना रहा कोई मैन्युफैक्चर तो उसके लिए मटेरियल क्या है, पेपर। तो वो फर्स्ट पेपर परचेज करेगा, पेपर परचेज करके पेपर को कन्वर्ट करेगा उसका एक शेप देगा, नोटबुक का शेप देगा। तो इस तरह से वो नोटबुक बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्स्ट वी रिक्वायर्ड मटेरियल। तो मटेरियल जो परचेज कर रहे हैं, मटेरियल परचेज करके क्या करोगे, वो मटेरियल को कन्वर्ट करोगे इनटू द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स। कहाँ पर कन्वर्ट करोगे, प्लेस वेयर वी कन्वर्ट, वेयर मैन्युफैक्चर कन्वर्ट मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, दैट प्लेस वी कॉल फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री में ये सब काम होते हैं, प्रोडक्शन होता है। तो एक मैन्युफैक्चर है, उसकी एक फैक्ट्री होती है और एक उसका ऑफिस भी होता है। ऑफिस जहाँ पर ये मेंटेन्स रिकॉर्ड्स, पूरा क्लरिकल वर्क, पेपर वर्क करेगा। तो एक फैक्ट्री है इसका और एक ऑफिस है। तो he'll incur expenses in factory, he'll also incur expenses in his office। ठीक है, फैक्ट्री में भी एक्सपेंसेस होते हैं इसको फैक्ट्री चलाने के लिए, और ऑफिस चलाने के लिए ऑफिस में भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑल दोज एक्सपेंसेस which incurred in factory or those expenses which are directly involved in directly relates to production, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। तो फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, all those expenses are directly relates to production। So those expenses we call direct expenses। Direct expenses, these are those expenses which are directly involved in production। So in other words, direct expenses को अगर हमको define करना है तो कैसे define करोगे, expenses which relates to factory, all those expenses which relates to factory called direct expenses। और एक point मैं यहाँ पर mention किया direct expenses को define करने के लिए, और एक point है on the basis of which we can define direct expenses, वो है before production। तो all those expenses which incur before production, प्रोडक्शन बनाने से प्रोडक्ट बनने तक जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। और एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसे बोलेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हिच रिलेट्स टू फैक्ट्री और ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हिच इनकर्ड व्हाइल कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, ऑल दोस एक्सपेंसेस वी कॉल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस विच इनकर्ड आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बनाने के बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट को सेल भी करना है, सेल करने के लिए भी एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो। तो ये एक्सपेंसेस कब होते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद। तो ऑल दोस एक्सपेंसेस विच इनकर्ड आफ्टर प्रोडक्शन कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस further classified into two types, direct expenses and indirect expenses। Direct expenses are those expenses which relate to factory or which incurred while making a product before production up to production, and indirect expenses are those expenses which relate to office or which incurred after production। Okay, so direct expenses and indirect expenses। Direct expenses, all direct expenses will appear in trading account, and indirect expenses will appear in profit and loss account। So all direct expenses will appear because in trading account we will find two sides, debit side and credit side। So on which side will record all direct expenses, on which side of trading account these direct expenses will appear on its debit side। So all expenses are recorded on debit side, all incomes and gains are recorded on credit side। So all direct expenses will appear in trading account on debit side, and all indirect expenses will appear in profit and loss account on debit side। So expenses, first class expenses, we classified expenses into two types, revenue expenses and capital expenses। Revenue expenses further classified into two types, direct expenses and indirect expenses। Direct expenses will appear in trading account and indirect expenses will appear in profit and loss account। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंसेस। ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट कैपिटल एक्सपेंसेस का एक्सप्लेनेशन हो गया। जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, जो रेयरली होते हैं, उसे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। जो एसेट्स को परचेस करने पर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस है। बिजनेस को परचेस करने पर जो एक्सपेंस होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस है। तो कैपिटल एक्सपेंसेस विल अपीयर इन बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंसेस विल अपीयर इन बैलेंस शीट। इन बैलेंस शीट आल्सो टू साइड्स विल बी देयर, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेकिन बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड नहीं बोलोगे, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड नहीं बोलोगे। बैलेंस शीट का भी प्रोफार्मा टी शेप में होता है जैसे अकाउंट का प्रोफार्मा होता है, लेकिन अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड नहीं बोलते, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो इसमें भी टू साइड्स है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, राइट हैंड साइड बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑल लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एंड राइट हैंड साइड ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड। तो capital expenses will appear in balance sheet, and on which side of balance sheet, on asset side of balance sheet। Okay, so capital expenses
balance sheet, asset side, right hand side. So expenses are classified into two types: revenue expenses and capital expenses. Revenue expenses further classified into two types: direct and indirect. Direct expenses appears in trading account, debit side. Indirect expenses will appear in profit and loss account, debit side. Capital expenses, all capital expenses will appear in balance sheet on asset side.